और जब मैं स्ट्रिंग मैचिंग कहता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या है? टू डिटरमाइन वेदर अ पैटर्न इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट और नॉट। जब मैं स्ट्रिंग मैचिंग कहता हूं तो मेरा क्वेश्चन है टू डिटरमाइन वेदर द पैटर्न इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट और नॉट। या जो रॉबिन कार्प है बेटा, इट यूजेस हैशिंग। इट फाइंड्स a pattern within a text using hashing। यहाँ हैश फंक्शन का यूज करके वो टेक्स्ट में पैटर्न कहाँ पे है, टेक्स्ट में पैटर्न कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई करता है। तो इसका और फायदा क्या हो सकता है? इट इज यूज्ड। तो एक्चुअली ये जो जैसे मैंने कहा था ना बेटा कि अगर मेरे को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बहुत बड़ा फाइल है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट है, उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, अगर ऐसा करना है तो वो क्या देता है, वो वर्ड के सारे अकरेंसेस हमको देता है। ये वर्ड इस टेक्स्ट में इतनी बार है, तो इट इज नॉट ओनली गिविंग मी एट विच पोजीशन इट इज प्रेजेंट, इट विल आल्सो सजेस्ट मी हाउ मेनी मैचिंग या कितनी बार वो वर्ड मेरे उस पूरे फाइल में है। तो रॉबिन कार्प इज वेरी गुड इन इट। इट इज यूज्ड टू determine multiple occurrences of pattern in the text। Now let us talk about रॉबिन कार्प एल्गोरिथम काम कैसे करता है। आपको एग्जाम में पूछा तो मैं जितना लिख रहा हूँ उतना ही लिखने का एल्गोरिथम। I am going to talk about a function रॉबिन कार्प। फंक्शन को मैं एक टेक्स्ट पास करूंगा, फंक्शन को मैं एक पैटर्न पास करूंगा, फंक्शन को मैं एक वैल्यू डी पास करूंगा और एक वैल्यू क्यू पास करूंगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टेक्स्ट का लेंथ एन होगा, ये मेरा टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा। टेक्स्ट का लेंथ एन होगा, एन कैरेक्टर 1 to n। पैटर्न का लेंथ एम होगा। D is the, you know what, it is length of input data set। Yes, D is the length of input data set। यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें D 256 है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाउएवर D कैन टेक एनी वैल्यू। वो डिपेंड करता है कि तुम अपने, मतलब जैसे D का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसमें कितने टोटल डेटा सेट सपोर्टेड है। सपोज मैं एक ऐसा टेक्स्ट यूज कर रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ A to J यूज कर रहा हूँ, ABCDEFGHIJ। A to J मतलब 10 कैरेक्टर्स होते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Suppose I am writing a text, and to write the text, I am only using first 10 alphabets. So now my D will be 10 only. Are you getting this? What I'm trying to convey? ये मेरा डेटा सेट है, ये क्या कहता है बेटा कि D का मतलब 256 है यहाँ पे। इसका मतलब मैं टोटल 256 कैरेक्टर्स यूज करूंगा, जिसमें जिसमें अपर केस A to Z भी आएगा, लोअर केस A to Z भी आएगा, डिजिट्स आएंगे, पंक्चुएटर्स आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे। तो ये सबको मिला के मैंने कहा है कि मैं जो टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ उसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स हैं। इज दिस क्लियर? ये जो डी है ये हमारा, जैसे मैंने कहा, सपोज मैं एक ऐसा टेक्स्ट लिखता हूं जिसमें A to I ही है। So now my D value will be 10। I am only using 10 characters to represent my text।
Is it clear? Here आपका algorithm जो है वो 256 characters लेगा. So you have the freedom of using 256 characters. Now there is something q. Q will be a prime number. Any prime number depend. So these are the input to the algorithm Rabin-Karp. Is it clear? सर फिर D और N में क्या डिफरेंस है? बेटा n is number of character. एक बात समझो जरा. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 4 4 8 4 12 4 16 4 20 n 20 है लेकिन D 4 है. I am only using 4 character to represent my text. Okay, sir, got it. Or D is the total length of the text, beta, which is 20. Got it? Yes, sir. Okay. मैंने कहा ये हैशिंग बेस्ड है, बहुत सारा कंप्यूटेशन है. वी विल गो वेरी स्लो. हम देखेंगे. अब मैं स्टार्ट करता हूँ. स्टार्ट. P को बोलो 0, T को बोलो 0. H एक वेरिएबल हम यूज करेंगे जिसका वैल्यू होगा d रेज टू m-1 mod q. C बेटा ये Rabin-Karp का एल्गोरिथम है, तो वी हैव टू अबाइड विद द फॉर्मूलाज एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय Rabin-Karp. तो हमको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा. फिर हम क्या लिख रहे हैं? फॉर I इक्वल टू 0 2 m-1 2 t इक्वल टू 3 into t plus pattern of I mod q. T equals to p into t plus text of I. मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं लूंगा. I will discuss the basic working principle. This is step 5, this is step 6, step 7. ये फॉर लूप के बाद एक दूसरा फॉर लूप चालू हो रहा है. I equal to 0 to n minus n 2. अगर p equal to t, then for j equal to 0 to n minus 1 2. If text of I plus j is not equal to pattern of j, then go to step 12. Step 12 बताता हूँ. This is step 8, this is step 9, this is step 10, this is step 11. Step 12 मतलब ये बाहर खत्म हो गया. फिर हमने कहा अगर j equal to m है, then this is step 12. j equal to m है. You have to trace this. मैं बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ, but we have to trace this. Pattern found at position j. खत्म हो गया. Step 14. अगर I, if j is not equal to m, we need to check with I. I less than n minus m है. So now it is the actual calculation starts. T का नया वैल्यू होगा t into t minus
text of I into H plus text of I plus N mod Q। और ये कैलकुलेट करने के बाद अगर t लेस देन 0 है, then t को बोला t प्लस Q। This is step number 16, this is step number 17, step number, ये मेरा एक करली ब्रैकेट ऊपर वाला करली ब्रैकेट है, step number 18 में हम रिटर्न। Now, I want you to write this algorithm because we have to, at the end of the day, trace it back. Now, question ये है कि सर ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताने के लिए एक मिनट, लेट मी शेयर समथिंग विद यू, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Okay, now please concentrate. Let me discuss the basic working principle. Can you all see this? Can you all see this? Please try to visualize. Suppose ये मेरा टेक्स्ट है बेटा, I'll go very very slow on this. Suppose ये मेरा टेक्स्ट है A, What is the length of my text? 6. And suppose this is my pattern A, B. What is the length of the pattern? 3. यहाँ पे ना बेटा हम कैरेक्टर, अभी देखो आपने एक बात नोटिस किया है, चाहे वो KMP हो चाहे वो नेव मेथड हो, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करते थे। ए मैच हो गया क्या? अगर मैच हो गया तो नेक्स्ट ए मैच हो गया क्या? अगर मैच हो गया तो नेक्स्ट ए भी मैच करते थे। मैच नहीं हुआ तो हम फिर ये 3 लेके मैच करते थे। मैच नहीं हुआ फिर हम ये 3 लेके मैच करते थे। मैच नहीं हुआ फिर हम ये 3 लेके मैच करेंगे। मैच हो गया। कैन यू विजुअलाइज व्हाट वाज हैपनिंग इन बोथ द केस? yes or no? Yes, sir. So what used to happen in naive method as well as in KMP was character by character matching take place. Here we are not doing character by character matching. यहाँ पे हम हैशिंग यूज करेंगे और देखिए कैसे काम करता है। See, here character by character matching is not implemented. Here the idea is to convert the pattern into a simple single numeric value. मैं इस पैटर्न को A को एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। Here the basic idea is to, फिर से सुनिएगा, to convert the pattern into single numeric value. सर वो कैसे न्यूमेरिक वैल्यू बनेगा जरा देखते हैं। Just imagine this is one way of doing it. मैंने क्या किया बेटा, हमने कहा 256 कैरेक्टर्स है। चलो हमने कहा 256 में तो अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, अपर केस लोअर केस, डिजिट भी आ जाएगा, पंक्चुएटर्स आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। आपने बचपन में पढ़ा था हर कैरेक्टर का अपना एक अस्काई वैल्यू होता है। यस और नो? कम ऑन टेल मी, हर कैरेक्टर का। तो हमने कहा लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस टेक ओनली 10 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर फ्रॉम A to J. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Since we are using only 10 character to represent the data set, तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा? 10.
and let us assign. मैंने कहा ASCII value is one way of doing it. यहाँ पे मैं ASCII value नहीं ले रहा हूँ. मैंने एक assume किया. I am assuming some code that I have assigned to every character. Let me assign 1 to A, 2 to B, 3 to C, 4 to D, and so on. So we have only 10 characters. To every character, I have assigned certain values. Is it clear? So Yes, sir. मैंने क्या कहा बेटा? We are not, please try to understand, bit complicated. We are not going for character by character matching. Rather, we wish to convert the complete pattern into a numeric value. तो एक तरीका ये है कि ये मेरा पैटर्न था ए बी. ए को क्या वैल्यू दिया 1, बी को क्या वैल्यू दिया 1, सॉरी बी को 2. तो लेट अस यूज वन मेथड ऑफ डूइंग इट. तो हमने कहा हम इसको 10 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों 10 के पावर? क्योंकि मेरा बेस क्या है 10. See, this is not the only way of doing it. Let us understand the basic working principle. Here the base is 10. In reality, the base may be different. Try to understand the basic idea is convert the whole pattern using some methodology. Convert the whole pattern using some methodology into a number. So I have used this methodology. So we have 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2. What is code for A? 1. So it becomes 1 into 10 raised to 2. Code for A is 1, 1 into 10 raised to 1. Code for B is 2, 2 into 10 raised to 2. Adding it, I got a unique value. I got a unique value means I got a numeric value. What is that numeric value, beta? 112. Means for the pattern, I got a numeric value. So if this is my hash function, so when I applied hash function on pattern P, I got a numeric value what? 112. So now अब मुझे क्या करना है ना बेटा, मैं इस टेक्स्ट के पहले 3 कैरेक्टर उठाऊंगा और मैच नहीं करूंगा. ये पहले 3 कैरेक्टर का हैश वैल्यू निकालूंगा, फिर नेक्स्ट 3 कैरेक्टर का हैश वैल्यू निकालूंगा. समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? Let us see. So for my pattern, I got this. Consider the text. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the length of the text. 6 is the length of the text. तो पहले 3 कैरेक्टर 1, 2, 3 पे जब मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया, व्हाट वैल्यू आई गॉट? व्हाट वैल्यू? 112. 111. On my, try to understand. On my text, on first 3 character, I am not matching character by character. I am simply applying the hash function. To get some value. The see logic ऐसा है, अगर वो pattern as it is वहां पे होगा तो hash value match करेगा के chances होते हैं ना बेटा? See, the same logic I am applying on first 3 characters, and if the pattern is exactly present, then the hash value will also be same. नहीं समझा? हेलो तो हेलो, am I audible? Yes, sir. मैंने पहला 3 कैरेक्टर लिया ऑफ द टेक्स्ट 1, 2, 3 ए 1 into 10 raised to 2, 1 into 10 raised to 1, 1 into 10 raised to 0. I got 111, which is not same as hash function applied on P. See, you don't have to write this in exam. This is explanation I am giving you. Now the same hash function I am applied on character 2 to 4. 2 to 4 क्या है अपने पास? A. सेम ही चीज मिला 111 नॉट इक्वल टू एच ऑफ पी. फिर मैंने 3 to 5 अप्लाई किया. 3 to 5 में कौन है? ए. अगेन आई गॉट 111.
फिर मैंने 4 to 6 पे अप्लाई किया, 4 to 6 पे अप्लाई किया, ए बी, आई गॉट 112 विच इज सेम। अगर हैश वैल्यू सेम है, वंस द हैश वैल्यू मैचेस, नाउ नाउ मैच विथ पैटर्न। सो ये जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैचिंग है, आई हैव टू डू विथ ओनली दोज सेट ऑफ कैरेक्टर whose hash value matches with the hash value of pattern. Am I okay in this? Yes, sir. तो हमको कब यूज करना है ये देखो, इसका लॉजिक ऐसा है ना बेटा, कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच तभी करेंगे जब क्या मैच कर जाएगा, हैश वैल्यू। तो ए बी के साथ हैश वैल्यू मैच कर गया है, 112 आया है, तो अब हम मैच करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक वर्किंग हियर। Sir. अच्छा, what happened here is, here our hash function was very simple. Now what happens in Rabin Karp is, in Rabin Karp is, the hash function is not that much simple. Hash function is which complicated. See, this is actually the function to calculate next value. What I want you to write this function Rabin Karp, because I will now be solving the example and we should understand वो कैसे आ रहा है. Please write this everyone. Please write this function Rabin Karp. Please write this. बेटा स्क्रॉल करते समय बताना, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व. तो ये प्लीज फॉर्मूला नोट कीजिए एंड देन वी विल सॉल्व टुगेदर. It will hardly take 15-20 minutes. Please write this. The scroll. In exam, if they ask you, they will only ask you this. Write short note on Rabin Karp. तो आपको मैंने ऊपर जो थियरी लिखा 2 लाइन वो लिखने का, और नीचे जो अल्गो लिखने का लिखा वो लिखने का, बस दैट्स इट.
Scroll. Hello. See, uh,
The process here is the same. The only thing is the hash functions are quite complex here. आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, हैशिंग में हमारे पास अलग अलग हैश फंक्शन थे, याद है? डबल हैशिंग, क्वाड्रेटिक, हेलो, आपके मिड स्क्वायर मेथड था। हमने यहाँ पे क्या है, हैश फंक्शन इस तरह से दिया गया है कि हमको सर्च जो है वो काफी रिफाइन हो जाएगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो जाएगी। So you have to understand and unfortunately remember the hash function also. Normally I don't ask people to remember things, but you have to remember the hash function because there has been certain pattern followed with trial and error method to come to this hash function. ये कंक्लूजन पे आने के लिए उन्होंने पैटर्न फॉलो किया गया। जैसे मैंने बताया था, मैंने एग्जांपल लेते समय क्या बोला, हमने बेस 10 लिया, हमारा हैश फंक्शन क्या था, 10 के पावर से मल्टीप्लाई करने। सो दैट वाज आवर हैश फंक्शन देयर, taking into consideration the large number of data set here, because here will be 256. So there have been a good hash function developed by Rabin Kar, and we have to follow that hash function. So you're requested not to write any other hash function, but to use only this hash function when Rabin Karp is asked. Is this clear? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So यही hash function. So can I start solving it now? Yes, sir. So now you have the formula. So let us start solving the hash function. Let us start solving the hash function. Let me take one text and let me take one pattern. Okay. Let me go to next. Okay. So I'll be in the same page. Okay. So let text be, let's say, तब जो मेरा टेक्स्ट है today is Sunday. ठीक है बेटा, इसका लेंथ कितना हो गया, 15। और मेरे पास एक पैटर्न है, सपोज I'll take rather simple pattern. 0 1 2, इसका लेंथ कितना हो गया, m3। इज दिस क्लियर? ठीक है, मेरा d क्या है, 256। और मेरे को क्या बोला बेटा, एक प्राइम नंबर लेना है ना, q इज द प्राइम नंबर। कोई एक रिलेटिवली प्राइम नंबर ले लो, लेट्स से 101 प्राइम नंबर है। You can take any prime number. If at all asked in exam, they will specify the prime number. So please consider this input. Please write this input, and we will start solving it step by step. Please note this input, everyone. Please note. See, here we can see today is present at position number 2. It is also present at position number 12. Day. Just see, it is day is here and day is here. But we need to find it using Rabin Kar. Please note this. नोट कर लिया तो बताओ बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व।
डन। वो सर वेट जस्ट इतना लिख लो, सॉल्व मैं करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टार्ट। सबसे पहले बेटा मेरे फॉर्मूला पे देखो क्या बोला है। चलो अब अपने आप, इसलिए मैं इसमें स्क्रॉल नहीं करूंगा, आपने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या बोला है, पी को बोलो 0, टी को बोलो 0, और h का वैल्यू क्या दिया है बोलो, d रेज टू m-1 mod q। करेक्ट? यस बोलो भाई, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे, खुश हो जाओ और एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। तो d का वैल्यू क्या है बेटा, 256, 256 रेज टू m क्या है 3, 3 माइनस 1 2 मॉड q मैंने यहाँ अज्यूम किया है, ये गिवन है, यू कैन गिवन और यू कैन अज्यूम इट, मॉड 101। चलो कैल्सी में बोलो 250 स्क्वायर मॉड 101, कैल्सी में मॉड की है वो यूज करो, मॉड फंक्शन है वो यूज करो, मेरे को आंसर बताओ। चलो फटाफट, 256 square mod 101, you have to give me answer। अरे कोई बताओ। सर एक मिनट। अच्छा कैल्सी लेके बैठे ही नहीं थे ना, कोई बात। अरे 10 सेकंड का कैलकुलेशन है कैल्सी। कोई नहीं बता रहा है। मैं बताऊं, 88। सबको आया 88? हेलो। सर कैलकुलेटर पे मॉड कैसे करेंगे? अरे मॉड की है ना भाई। अब मैं तो मेरे कैल्सी में यूज किया, वो ऐप होता है ना मोबाइल में, MOD ऐसा दिखेगा भाई, 256 स्क्वायर इज 65536। अपने को रिमाइंडर चाहिए भाई। समझा कि नहीं समझा पहले बताओ। ये मॉड क्या, मॉड कैल्सी में डालो, नहीं तो डिवाइड करके खुद ही देख लो, 101 से रिमाइंडर 88 आएगा। ठीक है, तो दिस h इज 88। नाउ अब मेरा एल्गोरिथम का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, देखो जरा, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। I0 to m-1, m-1 क्या होता है, m is 3, तो m-1 is 2। so नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, नाउ फॉर I equal to 0 to 2 बराबर है
I equal to 0 to 2 में हमको क्या फॉर्मूला बार बार लगाना है? We have to calculate value of P and value of P such that it is D into P plus pattern of I mod Q, and we have to calculate value of P such that D into P plus text of I mod Q. ये हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला, चलो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, यू हैव द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू। I पहले 0 होगा, I0, I1, I2, पहले I0 होगा। P क्या होगा? D। What is D? 256। What is P का वैल्यू राइट नाउ? P का वैल्यू राइट नाउ 0, D 0 प्लस पैटर्न ऑफ I, पैटर्न ऑफ 0, पैटर्न ऑफ 0 क्या है बोलो? पैटर्न ऑफ 0 क्या है? पैटर्न ऑफ 0 T है, कैरेक्टर। उसके बाद क्या बोला है? मॉड Q। बट D का SKI वैल्यू क्या है बेटा? 100। It is 256 into 0 plus 100 mod 101. The answer you will get is 100. Come on, tell me, समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं? यस सर समझा। ओके, बट ये अभी तो P कैलकुलेट किया, अब T कैलकुलेट करेंगे। T क्या है बेटा बोलो? D यानी 256 into P बराबर है, अच्छा D into T, सॉरी दिस इज D into T। P में P आता है, D में T आता है, सो सॉरी। Is D into T, so 256 into T, right now T is also 0 plus text of 0 कौन है? T है, mod 101। T का इसका वैल्यू क्या है? 116, so it is 0 plus 116 mod 101, and answer you will get is 15. So for I equal to 0, P is 100, T is 15। Clear? T का इसका वैल्यू बेटा, स्मॉल a का 97 है ना, तो 97 से आप ऐड करोगे तो स्मॉल t का 116 आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो I0 हो गया, I1 P क्या होगा? 256 into पुराना P। व्हाट इज पुराना P? 100 प्लस P of 1 कौन है? A mod 101। एक आज की वैल्यू 97 है, तो क्या हो गया? 256 into 100 plus 97 mod 101, you will get 43। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम देख लेना इसको सॉल्व करके। You will get 43 and T will be 256 into T का वैल्यू, T का पुराना वैल्यू 15 था, into 15 plus T of 1 O है, O mod 101। O का इसकी वैल्यू है शायद 111 बराबर ना बेटा? तो ये आएगा 56 into 15 plus 111 mod 101। You will solve it, you will get answer as 12. So for I equal to 1, we calculated P, we calculated T. For I equal to 2, again P is 256 into purana value of P is now 43 plus P of 2. P of 2 is Y mod 101। Y का इसकी वैल्यू क्या आएगा बेटा? 121। So what you will get is 256
One answer we get is 90. T का वैल्यू होगा 6 into T का पुराना वैल्यू 12 है, 12 plus T of 2 में D है, D समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? See, you just have to follow the algorithm. That is, I mean, you can't do anything here. There is no way by which you can change it because this is the proprietary copyright of Rabinka. We just have to understand it. We don't have to modify it. Remember this. We are not here to modify it. We're just here to understand how Rabinka works and the basic mathematical model behind it. Small d will be कितना बेटा d का 100 256 into 12 plus 100 mod 101. That will give me 41. Is it clear? तो हमने वो फॉर लूप वाला, ये फॉर लूप 0 से 2 तक t का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. t का लास्ट वैल्यू 19 है, q का t का लास्ट वैल्यू 41 है. क्लियर और नॉट? Yes, sir. So after this, after for loop, what is value of t? We got 90. What is value of t? We got 40. कोई confusion? Should we go back to the algorithm now? Let us see. Let us go back to the algorithm. ये मेरा for loop complete हो गया बेटा. अब अगेन एक दूसरा for loop आया. n minus m. n क्या है हमारा? 15. n क्या है? 3. तो अगेन एक नया for loop आ गया. मैं for loop यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ so that हमको ट्रेस करने में आसानी होगी. Now for I equal to कहाँ चालू हो रहा है बोलो? 0 तो 12 ना बेटा? Yes, sir. तो इनिशियली I क्या होगा? 0. फॉर लूप में प्लीज ध्यान से देखना जरा. एक मिनट बेटा, एक ये पूरा स्टेप नंबर 7 से लेके अब 17 तक जाना है, इसलिए मैं पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ ध्यान से देखना. दैट इज द रीजन आई आस्क यू टू राइट द फॉर लूप. यू नो I 0 है. 0 कंडीशन क्या चेक करेगा? इफ p इक्वल टू t. बताओ जरा, व्हाट इज p? What is p and what is t? 41. Is p equal to t? No. P is not equal to t. Is this clear? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है देखो ना. If p is not equal to t, तो ये if part चला गया बेटा. If part will not be our area of interest because p is not equal to t. Then it will check this if part. If j equal to m, is j equal to m? J is 0, m is 3. Hello. So we need to calculate next value of. ये देखो, is now we need to calculate next value of t. I less than n minus m. Yes. I 0. It will be less than 12. Yes. So we need to calculate next t basically. See, इसका basic idea क्या, अगर match नहीं कर रहा है ना, calculate next t. So calculate next t. तो ये t कैसे कैलकुलेट करेंगे? t का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, बोलो. d into t minus text of I into h plus text of I plus m mod q. ये फॉर्मूला है. चलो सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज d? व्हाट इज d? 256 into t का क्या वैल्यू है? 41. टेक्स्ट ऑफ 0 क्या है बोलो? टेक्स्ट ऑफ 0 क्या है? t. t का की वैल्यू क्या है? 116.
इंटू एच, एच का क्या वैल्यू आया था अपने पास 88 प्लस टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज आई 0, व्हाट इज एम 3 mod q. Now what is text of 3? A. Correct. So that is a. A मतलब 97. You will solve it. Come on, tell me what value you get. Come on, tell me what value you get. Fast, fast, solve this. For A, use 97. Just tell me what value you get. See, in exam, you don't have to solve it. Please be rest assured. They have not asked you to solve up till now. कभी नहीं पूछा है. I am planning to share all the previous year questions of AOA with you. चलेगा? जितने भी लास्ट और जिनके सोल्यूशन मेरे पास है वो सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लास्ट ईयर क्या पूछा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. ऑनलाइन ऑफलाइन लास्ट 3-4 ईयर और 4-5 इयर्स के मैं पेपर्स आपके साथ टीम पे शेयर करूंगा बेटा. और जिसके सोल्यूशन मेरे पास है वो सोल्यूशन भी शेयर करूंगा. विल दैट बी ओके? Yes, sir. Okay, so that should help you. Come on, tell me what value you get. T का value 76. हाँ? 76. नहीं, एक मिनट इसको बराबर सॉल्व करना. ये ब्रैकेट ऐसा नहीं आएगा. सॉरी अभी तक इट इज टेक्स्ट ऑफ आई इनटू एच ना बेटा. According to my calculation, you should get minus 87. Yes? Minus 87, correct? Okay. Now check. You get T as minus 87. Condition check. You get T ka value. Is it less than 0? Yes? Yes, sir. If it is less than 0, what is new value of T? T plus Q. T is minus 87, Q is 101. What is new value of T that you got is 14. Yes? This is for I equal to 0, na? Yes, sir. We need to solve again now. For I equal to 1. अब तक T क्या था? 19. T क्या आया अभी? 14 आया. 41 से T चेंज होके 14 आया. अगेन हमने कंडीशन चेक किया. P is not equal to T. So we need to calculate next T. T का वैल्यू 256 into T का नया वैल्यू क्या है? 14 minus text of I. I is 1. Text of 1 कौन है बोलो? वो है into H 88 plus text of I is 1 plus M 3 mod Q. It is 256 into 14 minus. फोकस के वैल्यू क्या है बेटा? 111 into 88 plus text of 4 क्या बताओ? EODAY. Y mod 101. Y का क्या वैल्यू आएगा? 121
सर 82 आएगा टी का वैल्यू, नेगेटिव 82। हाँ, -82, परफेक्ट। -82 आया। Since t is less than 0, so t equal to t plus q. What is t minus 82 plus q is 101. What is t value now you got is 19। 19. Now you need to solve for I equal to, ये हमको तब तक करना है जब तक t not equal to p। एक्चुअली मैं हैश फंक्शन अप्लाई करते जा रहा हूँ। आपको एक मिनट अगर आपने विजुअलाइज अब तक नहीं किया होगा, मैं इसलिए चाह रहा था आप पहले सॉल्व करें तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे। अगर आपने देखा होगा ये जो पहला फॉर लूप है ना बेटा, ये मेरे पहले, ये मेरे समझो पहले 3 कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पैटर्न का लेंथ 3 है, तो पहले 3 कैरेक्टर का पैटर्न का हैश वैल्यू निकाला है और पहले 3 कैरेक्टर टेक्स्ट का हैश वैल्यू निकाला है, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, हेंस 0 to 2। समझ रहा है? यस सर। But I will recommend don't go after this. You will find ready-made code for it. You don't have to go for much understanding. You just have to be aware कि भाई ऐसा कुछ algorithm है। I equal to 2 हो गया है। P क्या है मेरा? P तो change नहीं हुआ था और T क्या है? 19। Yes. Now since P equal to T, अब देखो जरा, P अगर equal to T है तो J कहाँ से चालू करो? 0 से -1। सही। रुको, अब मैं इतना पार्ट में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। Is it visible? Is it visible? यस सर, यस सर। ओके। हमने क्या बोला बेटा, मेरा आप देखो, मेरा टेक्स्ट क्या था? मेरा टेक्स्ट था TODAY। टुडे इज क्या था? टुडे इज संडे, है ना? यस सर। टुडे इज संडे। ओके। हमारा टेक्स्ट था टुडे इज SUNDAY 01 और मेरा पैटर्न क्या था? डे P1 स्टार्ट। P इक्वल टू T, यस P इक्वल टू T। तो J को क्या बोलो? 0 2 M-1 3 -1 2 तक जाएगा। पहले J का वैल्यू क्या होगा? 0। क्या चेक करेगा? टेक्स्ट ऑफ I। व्हाट इज I? अरे I is 2। देखो ना भाई, I is 2 plus J is 0 and we are compared with pattern of J is 0. Is text of 2 is equal to pattern of 0? इक्वल है। Yes, equal। देखो, अगर नॉट इक्वल होगा तो स्टेप 12 में जाने का। इक्वल है तो I प्लस J प्लस प्लस और लूप ना। सर Now J become 1 less than 2, yes। Text of 2 plus 1 equal to pattern of 1, yes। 2 plus 1 3, text of 3 is equal to pattern of 1, yes। J plus plus J become 2, text of 2 plus 2 is pattern of 2, yes। 4 is equal to 2, yes। J become 2, then J become 3। 3 तो 2 तक जाएगा ना। J less than equal to 2, no, बाहर आएगा और क्या?
Is J equal to M? इसका तो परफेक्ट मैच हो गया. Yes, sir. Pattern found at J. What is J here? 3. 3. देखो ना, pattern found at 3. 3 should be, नहीं, एक मिनट, अपना 2 आना चाहिए ना. सर J और J -1 भी. J हमेशा 3 आएगा. J 3 ही रहेगा. करेक्ट. पैटर्न फाउंड एट T, बट पैटर्न फाउंड एट 2 ना, तो J -1 अपडेट करना चाहिए. I होना चाहिए ना सर. सर अगर वो 12 पे भी आके चेक करेगा तब भी J 0 से Pattern found at I. Perfect. It should be pattern found at I. I is 2 ना. Perfect. I agree. My bad. Perfect. Very good. Pattern found at I. मैं अपडेट करता हूँ. Please update your code. Pattern found at I. That is true. Because J तो पैटर्न के लिए है ना. I टेक्स्ट के लिए है, तो we should always represent it in form of कि भाई टेक्स्ट में कहाँ पे. Pattern found at I. So see, what is the bottom line is they are using some hash function. Is that clear now? देखो एक बात नोटिस करो, ये वाला देखो. अगर एक बात, see, this is quite interesting. If P is equal to text, now they are going for character by character matching. मतलब if the hash value is matched, then go character by character matching. Is this clear? Understood? Yes, sir. So this is the last algorithm that you were supposed to have, which is Rabin Karp. ये वाला पेज मैं रहने दूंगा क्योंकि यहाँ मैंने Rabin Karp के और छोटे-छोटे एग्जांपल लेके रखे. वही. What is the approach? What is the goal? So we are going after some function. ये sample function है. You're not supposed to write it for exam. This is only for understanding. Is it clear? Now something interesting is this. जो हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था. क्या रह गया था? आपको एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतना अंडरलाइन करूंगा. पॉलिनोमियल टाइम. नाउ व्हाट इज दिस? एक्चुअली रिसर्च टॉपिक है. PNP, NPC, these are all research topic. आपको 2 या मैक्सिमम 4 मार्क, बट मेरे को नहीं लगता 4 मार्क, because as per the new policy it will be only asked for 2 marks. So let us understand. I hope उस दिन रुपेश सर के लेक्चर में आपने सुना होगा. तो आपने क्या सीखा पहले वो मुझे बताओ. I just want to know what you understood by what you mean by P, what you mean by NP. P मतलब क्या बेटा? ऐसा कोई भी एल्गोरिथम जो पॉलिनोमियल टाइम में हमको समझ में आ जाए, बराबर, जिसका सॉल्यूशन हमको पॉलिनोमियल टाइम में मिल सकता है, उसको हम P प्रॉब्लम्स कहते हैं. यस और नो? अच्छा, कोई एग्जांपल बताओ पॉलिनोमियल प्रॉब्लम का. भी सॉर्टिंग टेक्निक. कोई भी, जैसे n स्क्वायर n क्यूब, तो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रहा है ना बेटा. NP क्या होता है? नॉन पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा जिसका सॉल्यूशन हमें पॉलिनोमियल टाइम में नहीं मिलेगा. पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा का मतलब क्या होता है? तो एक एग्जांपल दो. रिसर्च. हाँ बेटा. बाइनरी सर्च. बाइनरी लॉगरिथमिक है. लॉगरिथमिक तो पॉलिनोमियल से भी इजी होता है ना बेटा. बहुत बड़ा जो सर जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होगा. परफेक्ट, वेरी गुड. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट NP ना बेटा, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे 2n, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कुछ लिखता हूँ. चलो, ये तो आपके पास है, रहेगा ही. Let me write something so that it will be better to discuss. Okay.
आई विल ओनली डिस्कस पी एंड पी, बस जितना आपको एक्सपेक्टेड है. So consider, let us talk about polynomial time. ठीक है, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा लीनियर सर्च. लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है. बाइनरी सर्च बच्ची ने अभी कहा क्या है बेटा, लॉग है. आपने कहा इंसर्शन सॉर्ट. सपोज फॉर एग्जांपल उसमें बेस्ट है वर्स्ट है. बेस्ट हो गया ओमेगा n, वर्स्ट हो गया बिग O ऑफ n स्क्वायर. क्विक सॉर्ट या बबल सॉर्ट जो भी है, लेट्स से बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट बेस्ट है तो भी n स्क्वायर, वर्स्ट है तो भी n स्क्वायर. चलो इधर ओमेगा लिख देना चाहिए, ओमेगा n स्क्वायर. ना क्या है ना बेटा, ऐसे एल्गोरिथम में देखो इंसान क्या होता है, इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती. इंसान क्या कहता है, यार ये जितने भी एल्गोरिथम है सब पॉलिनोमियल टाइम में आ जा रहे हैं, डिटरमिनिस्टिक है. अगर हम थोड़ा सा कुछ भविष्य में देखिए, इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है. इन फ्यूचर आई मे डू सर्टेन मॉडिफिकेशन so that even I can get better result. I may get result in constant time. Exponential time जो होते हैं, exponential time जैसे sum of subsets. sum of subsets हमने किया ना, उसके exponential order ऑफ होता है t raised to n. ग्राफ कलरिंग बैक ट्रैकिंग का नॉर्मली यही रहता है 2 raised to n. यहाँ पे देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है. फ्यूचर वर्क, डू रिसर्च to try to reduce कॉम्प्लेक्सिटी. हमारा एक ही काम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होना चाहिए. तो जिसका आज पॉलिनोमियल टाइम में मिल रहा है सॉल्यूशन, हमारा एम होना चाहिए कि एम फॉर जिसका आज पॉलिनोमियल मिल रहा है उसका एम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टाइम में मिल जाए. और जिसका आज एक्सपोनेंशियल मिल रहा है, ऐसा हमारा उद्देश्य है. ये हमारा रिसर्च का ट्रैजेक्टरी है. जो आज एक्सपोनेंशियल टाइम में है, हमारा एम क्या है बेटा, कि भविष्य में जाके वो क्या हो जाए, पॉलिनोमियल टाइम में आंसर मिलना चालू हो जाए. इज इट क्लियर? यस सर. नाउ अब आप ये सोच रहे हो कि यार इसमें ना बेटा, सर ने शायद आपसे बात किया होगा, CNF सेटिस्फाइबिलिटी बोला है आपसे. CNF पता है ना आपको? अरे DLDA में नॉर्मल फॉर्म. यस सर. समझो, अगर मैंने आपसे कहा, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहला प्रॉब्लम था जो आइडेंटिफाई किया गया. समझो मेरे पास एक CNF प्रॉब्लम है. मैंने कहा x1 x2 बार x3 and x1 x2 बार. Let xi be any problem that has x1 x2 x3. Now मुझे क्या बोला गया है, we want to find value of x1 x2 x3 that satisfies above. ये सेटिस्फाई करने वाले x1 x2 x3 का वैल्यू चाहिए. अब एक बात बताओ, x1 x2 x3 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 raised to 3, all 0 से all 1 तक. So if we have, can you visualize? If we have 3 variables, so we have 2 raised to 3 possibilities. भाई इतने पॉसिबल वैल्यूज होंगे. मतलब क्या,
मुझे ये चेक करना है कि x1, x2, x3 के कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1, x2, x3 के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3 वेरिएबल के साथ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। So I have to substitute 8 possible values in the above CNF to check whether it's satisfied or not. अरे समझा? Yes, sir. लेकिन बेटा 3 वेरिएबल है, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम बहुत सारे, जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, हमारे पास n फीचर्स हो सकते हैं। If we have n variables, तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? पावर n 2 raised to n मतलब ये फटाक से कहाँ चला गया? एक्सपोनेंशियल टाइम। yes sir तो पहले तो सी, अब आप समझने की कोशिश कीजिए पी क्या होता है। पी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा पहले। सी प्रॉब्लम्स that can be solved where in what time? In polynomial। np क्या होता है बताइए? np क्या होता है? सी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन वेरीफाई हो सकता है। अगर मुझे किसी ने आंसर दे दिया, अच्छा एक बात बताओ, मेरे को किसी ने बोला गिव मी व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ x1, x2, x3 टू xn। ओके चलो, हमने कहा x1, x2, x3 तो 8 पॉसिबिलिटीज था बेटा। लेकिन अगर किसी ने मुझे suppose someone gives me one value of x1, x2 and x3 and asks me to check whether this particular value satisfies or not, वो तो हम polynomial time में solve कर लेंगे। मेरे को बोला 0, 1, 0 satisfy करता है कि नहीं, मेरे को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ चेक करना है। Yes. मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ एग्जाम्पल उतना ही पढ़ना है। Is said to be solvable in polynomial time if the number of steps required to compute the algorithm for a given input for some non-negative k is of the form O raised to O of n raised to k, n square n cube is of the form n raised to k ना? Yes, sir. What is polynomial time verification? अगर मुझे किसी ने प्रॉब्लम दिया है और उसका एक सोल्यूशन दिया है, वो सोल्यूशन राइट है कि नहीं, ये मैं पॉलिनोमियल टाइम में अगर फाइंड कर सकता हूं। द प्रोसेस ऑफ verifying in polynomial time whether the given solution solves the problem or not is called as polynomial time verification. Is this clear? अच्छा, इसके बाद आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा, बस खत्म। That's the only most important question that may ask you. What is P, NP and NPC classes? बस। So P class का definition. A class P consists of those problems that are solvable in polynomial time। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n raised to k, k is any constant, 2 raised to n में जो पावर है वो वेरिएबल है, n is variable, so it is exponential। समझ रहे हैं? हाँ Try to understand. Here power is variable n, here n is variable but k power is constant, see for constant k। So आपको सिर्फ यही पढ़ना है, what is P class, what is NP class and what is NPC class। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए, वो P क्लास को बिलोंग करता है। NP क्लास क्या होता है? NP क्लास कंसिस्ट ऑफ दोस प्रॉब्लम दैट आर वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम। मतलब पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई मुझे सॉल्यूशन दे देगा, आई कैन वेरीफाई दैट सॉल्यूशन इन पॉलिनोमियल टाइम। इट मींस दैट if we are given a certificate of solution, then we would verify that certificate is correct or not in polynomial time। Is this clear? Yes. yes sir See, अगर कोई देखो, any problem in P is also in NP। क्यों? ध्यान से, अगर हम वेरीफाई कर सकते पॉलिनोमियल में तो सॉल्व भी करेंगे। Since if the problem is in P, then we can solve it in polynomial time without using certificate also।
Next is NPC. I mean, this is complicated terminology. Just try to understand. A problem is in NPC class if it is NP and hard as any other problem in NP. Oh, what is this? See, NPC का मतलब complete. Polynomial NPC कब होगा? पहला, if it is NP. Second, if it is as hard as any problem in NP. ये एक्चुअली थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच है. ये क्या कहता है? जस्ट एग्जाम्पल. जैसे वर्टेक्स कवर, सर ने एग्जाम्पल लिया होगा. मुझे बोला है बताओ वर्टेक्स कवर इज एनपीसी और नॉट. वर्टेक्स कवर आपको मालूम है ना प्रॉब्लम क्या होता है? उस दिन आपने सुना भी होगा. हाँ सर. बेटा ये क्या होता है? वर्टेक्स कवर एनपीसी है कि नहीं प्रूव करो. तो एक पहला अप्रोच क्या है? प्रूव वर्टेक्स कवर इज एनपी. वी कैन इजीली प्रूव. क्यों? अगर किसी ने मुझे वर्टेक्स कवर का सोल्यूशन दिया तो मैं आराम से पता कर सकता हूँ वो सोल्यूशन सारे वर्टेक्स को कवर करता है कि नहीं, इजीली. अच्छा, ये क्या होता है? दूसरा, अब एक एग्जांपल समझो जरा. ये जो सेकंड पार्ट है ना, एज हार्ड एज एनी प्रॉब्लम इन एनपी, व्हाट इज दिस? ना इमेजिन, सपोज ओके, यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ मूवी, किंग रिचर्ड. प्राइम पे आया है, मालूम है तुमको? ऑस्कर मिला है विल स्मिथ को. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? वीनस एंड सेरेना विलियम्स. तुम भी देखो, सीखने को मिलेगा. ठीक है. उसमें एक ऐसा केस था लास्ट में where Venus Williams at the age of 15 she was playing against world number 1. I'm not getting the name. Sanchez, ऐसा कुछ नाम था शायद. Just try to understand this. Suppose Venus Williams is playing against world number 1. Right now Venus Williams has not played, let's say, any match. So I don't know na. I don't know what is the current class of Venus Williams. मैं क्या करूंगा? I will play Venus Williams against the rank 1, and if she defeats rank 1 means she is fit enough to be the new rank 1. Are you getting what I'm trying to do? Is I want to determine whether a problem is NPC or not. First I will find it is NP. अगर वो NP है, next मैं क्या करने की कोशिश करूंगा कि कोई नोन प्रॉब्लम जो NPC है उसमें मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि सर ने वर्टेक्स कवर का रिड्यूसिबिलिटी बताया होगा आपको. यस, क्लिक प्रॉब्लम और वर्टेक्स कवर आपको मैच कराया होगा. आई एम श्योर. वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट मच. वी हैव अ क्लिक प्रॉब्लम. क्लिक इज अ नॉन स्टैंडर्ड एनपीसी. ठीक, पहले मैं एक ऐसा लिखूंगा, क्या ये एनपीसी है? एक प्रॉब्लम है जो मुझे पता है एनपीसी है, जैसे CNF satisfiability मुझे मालूम है NPC है. तो मेरा जो प्रॉब्लम है मैं उसको CNF satisfiability में रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर. अगर रिड्यूस हो गया तो सिंस मुझे पता है CNF satisfiability is NPC, तो मेरा प्रॉब्लम भी NPC होगा. She tried to go concentrate on the terminology. If it is in NP and is as hard as any problem in NP, आप है ना सिर्फ ये जो मैंने इतना अंडरलाइन किया उतना रीड कर सकते हो. हेलो, आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू गो इन डिटेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पी एंड पी. जस्ट इतना समझो आपके लिए. पहला, पी क्या है? एक ऐसा प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइप में सॉल्व हो जाए. जो भी अब तक हमने पढ़ा, जो एक्सपोनेंशियल नहीं है वो सारे पॉलिनोमियल. एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम है कि पावर ही वेरिएबल है, बहुत टाइम लग सकता है फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n. n का सफिशिएंट लार्ज वैल्यू दिया तो बहुत टाइम लग सकता है, तो उसको हम NP कहेंगे. लेकिन उसका अगर किसी ने आंसर दिया तो मैं फाइनाइट टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, बता कर सकता हूँ कि आंसर राइट है या रॉन्ग. NPC क्या है? पहला तो NP होना चाहिए, यानी अगर किसी ने आंसर दिया तो मैं पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकता हूँ ये आंसर राइट है कि रॉन्ग. और दूसरा, इट शुड मैच, should be able to be reduced to any known NP problem. बस इतना आपको फर्दर टाइम दिन ध्यान रखना है.
Is it clear? सर हाँ बोल बेटा। सर सबसे पहला एनपीसी कैसे डिटरमाइन किया रहेगा? जब तक कोई एक एनपीसी है उसके ऊपर से हम लोग पता कर सकते हैं ना कि हाँ, नहीं नया नहीं, वाला वो एनपीसी इसीलिए है। जो पहला है, पहले के लिए एक्सेप्शन रखा, और पहले के ना सीएनएफ सेटिस्फाइबिलिटी को माना जाता था पहला। तो हम ऐसे बोलते थे, सबसे पहले हमें पता चला सीएनएफ सेटिस्फाइबिलिटी को, हमने अज्यूम किया ये एनपीसी है, खेल ऐसा है। तो जो भी पहला निकला वो अजम्पशन से निकला, तो जो आगे के वो सब Obvious. भी एक्चुअल में अजम्पशन आगे के लिए नहीं, हाँ बराबर है, तो मैंने कहा ना आगे के भी आप असम्पशन नहीं मानो बेटा। एनपी प्रॉब्लम्स आर स्टिल मोस्ट रिसर्च प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिनके अब तक आंसर ही नहीं आया। हम 100 साल से प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हैं, वो सारे एनपी प्रॉब्लम्स हैं। एल्गोरिथम के फील्ड में एनपी इज लाइक फिजिक्स में जाके क्वांटम स्टडी करना। देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज, क्योंकि सब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है ना बेटा। हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स है, फिर भी हजारों साल लगेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने को। Okay, I mean, I can show you something. Example of NP problems unsolved. देखो ना, the biggest unsolved problems in computer science. अच्छा, मेरे को अभी क्या कर रही है, मीडियम है। आप ऐसा गूगल करोगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे प्रॉब्लम। मीडियम में मैं बहुत सारा सर्च किया है, तो मुझे बोल रहा है वो, एक मिनट, optimization problem of finding least cost cyclic route through all nodes of weighted graph, decision subset problem। याद है हमने जो सबसेट प्रॉब्लम किया था? These are NP hard problems. Subset problem, traveling salesman problem. Yes, yes, traveling salesman is still NP hard. There are many problems. अगर आप वेन डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखिए क्या होता है ना, शुरू में ना बेटा हमारे पास किसी प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन नहीं था। फिर उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका हमको पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन मिलना चालू होता है, वो हमारे पी होते हैं। देखिए एक ऐसा समय आएगा जब पी धीरे धीरे ग्रो होते हैं, पी पूरा एनपी को कवर कर लेगा। अभी जितने हमारे पास नॉन डिटरमिनिस्टिक हैं, धीरे धीरे हम ये मान रहे हैं कि वो नॉन डिटरमिनिस्टिक को हमारे पास कुछ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज आएंगी, कुछ कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज आएंगी हमारे पास, जो हमारे जितने भी नॉन डिटरमिनिस्टिक हैं वो धीरे धीरे पी में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इसलिए जो पी का बबल है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और पूरे एनपी को कवर कर लेगा, ऐसा हमारी इच्छा है। एंड देन वी हैव सम एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स। एनपी कंप्लीट में क्या हो रहा है, अगर आप देखें, एनपी कंप्लीट इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनपी हार्ड। means these are NP problems and which is hard as any other problem in NP. तो वो जो intersection है वो NP complete है। Let me copy this and let me paste it here. So it is still, you know, ये एक छोटा सा debatable concept है कि, एक मिनट, it is still a topic under research with respect to many problems. But for that you need to have a very good mathematical foundation to understand those problems. पहले ही आपको था वर्टेक्स कवर और क्लिक प्रॉब्लम, मेरे पास उसके कंप्लीट नोट्स भी हैं। ये एनपी कंप्लीट प्रूफ्स हम लोग मैनुअली हम लोग बच्चों को सॉल्व कराते थे, बट देन सिंस इट इज नो लॉन्गर देयर इन योर सिलेबस, सो मैंने उतना कम कर दिया है। मैंने फिर भी काफी सारे नोट्स दिए हैं तुमको, बट आपको एग्जाम में अब सिर्फ इतना है ये पढ़ने का, PNP NPC classes. This is all you will be asked in exam. So for exam point of view, this is sufficient enough. Is this clear, beta? ठीक है, तो with this I have completed every topic there in your syllabus.
थोड़ा सा डिले हो गया हमारा 1-2 हफ्ता बिकॉज एनबीए के टाइम और उसके पहले थोड़ा सा, so I'm extremely sorry for that, but I have tried my level best to cover everything and thanks to you कि आप लोग ने आउट ऑफ शेड्यूल भी आपने लेक्चर अटेंड किया, so I'm very thankful. I hope तुमको समझ में आया होगा. अगर कोई टॉपिक रहा होगा जो तुमको नहीं समझा तो आप प्लीज वाइवा के बाद एग्जाम के पहले आप मुझे बोलिएगा, मैं सेशन लेके आपको वो चीजें फिर से समझा दूंगा. Is it clear? Regarding practical exam, how our practical exam will be conducted? Can I give you any brief about it? Sure, sir. See, you have been given 7 experiments, correct? Yes, sir. मैंने ऐसा डिसाइड किया है बिकॉज ये पहली बार बच्चे, जैसे मैंने आपसे उस दिन भी कहा, पहली बार आप ऑफलाइन मोड में आएंगे. आप लोग ने एक नया छोटा सा आर्टिकल पढ़ा होगा जहां वी वांट टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स इन स्ट्रेस फ्री मैनर. So what I will recommend is you come up with any 2-3 programs. चलो ये दो हमको बहुत अच्छे से है. अच्छा, and what I wish is, you know what, जैसे how I will conduct the Viva. I will try to conduct Viva in a group discussion format. So let's say I can have a group of people who will say, sir मेरे को ना asymptotic notation बहुत अच्छे से आता है. Recursion जो recurrence relation है ना, मेरे को तीनों मेथड पे मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ. So we will have group of people discussing amongst each other. I will only observe you guys. So it will not be a question answer session because like question answer session में it may happen आपने 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने चौथे चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है. So instead of what you know, I'm asking you something which you don't know. जबकि हमारा वाइवा का इंटेंशन है कि आपने क्या पढ़ा है वो बताओ हमें. तो वी विल ट्राई टू कंडक्ट वाइवा इन ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट. तो लाइक अगर आपने कुछ कोई अच्छा टॉपिक पढ़ गया, जैसे एक बच्चा बोलेगा सर मैं पीएनपी पे बात करूंगा, मैं थोड़ा एक वीडियो पढ़ने वाला हूँ, अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा यू गो थ्रू सम वीडियोस ऑफ पीएनपी एनपीसी एंड कम एंड डिस्कस पीएनपी एनपीसी. दैट इज ऑल योर वाइवा इज. रिगार्डिंग प्रोग्राम, you run any one program, that is done. If out of 7 if you are confident, sir ये 2 मेरे को आता है, उसमें से कोई एक दे दो आप, ये 3 मेरे को आता है, उसमें से कोई एक दे दो आप, that will be sufficient. And regarding oral, regarding practical पहले बताता हूँ. You will come up, sir ये मेरे को 2-3 आता है, जैसे मैंने पहले भी आपका ऐसे ही लिया था, डेटा स्ट्रक्चर में भी मैं आपसे पूछ के देता था. If you are comfortable then we continue, otherwise मैं चेंज कर देता. But that was online mode. This is offline. There might be chance that you will be under some pressure. We actually don't want you to be in any kind of pressure. It should be a pleasant experience. So you come to me, आप सामने से आओ, सर ये 3 मेरे को आता है 7 में से, आप मेरे को 3 में से जो बोलो मैं वो करता हूँ. समझ में आया? That 3 out of 7 can be anything, हाँ? That 3 out of 7 can be anything. अच्छा, ये हो गया प्रैक्टिकल. ओरल कैसे होगा? तो आप मेरे को, सर हम 4 बच्चे ना, हमने असिम्प्टोटिक नोटेशन हम अच्छे से समझाते हैं. कोई बोलेगा सर हमें ना डायनामिक के कुछ एग्जांपल्स बताते कैसे सॉल्व करना है. फिर कुछ बोलेगा सर हमको ना पीएनपी आता है. सो इट विल बी मोर ऑफ जीडी देन अ पर्सनल इंटरव्यू. नॉर्मली वाइवा पर्सनल इंटरव्यू जैसा हो जाता है ना बेटा. वी वांट यू टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ सो दैट इट विल बी लाइक किसी ने कुछ नया पढ़ के आया है, सर डायनामिक में ये हमारे सिलेबस में नहीं था बट ये मैंने थोड़ा पढ़ा है, अच्छा है. We want you to come up with something new. Even that could be other outside the syllabus also, that will work. No problem at all. I hope you understood what is expected from you. Yes sir, वो ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे या आप बताओगे? बेटा आप सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा मेरी तरफ से, बट उसका बहुत ज्यादा भीड़ मत करो. 4-4 का ग्रुप बना लो तो भी चलेगा बेटा, बट अच्छी चीजें बात करो. सी लिसन हियर, we don't want to give you marks for free. We want some healthy discussion should come out of it, some conclusion should come out of it. ऐसा लगना चाहिए ठीक है हम चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, लेकिन वो मेहनत ना आउट ऑफ पैशन होना चाहिए, आउट ऑफ स्ट्रेस नहीं. तो तुम डिसाइड करोगे चलो हम डिवाइड एंड कॉन्कर पे करेंगे, तो सर हम अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपने जो पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे, कुछ हम नया ढूंढेंगे इंटरनेट पे. तो आपके पास समझो आपका 6 तारीख को एग्जाम है प्रैक्टिकल, आपके पास 6 तारीख है, मतलब अभी लगभग 7-8 दिन है. कुछ अच्छा सा बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ के कुछ कंक्लूजन निकाल के आपस में बात कीजिए. आप समझे हमारा इंटेंशन क्या है?
कि आप Yes. थोड़ा सा हाँ, sir. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है वो एग्जांपल्स निकाल लीजिए, उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये एल्गोरिथम कैसे यूज हो रहा है वो निकाल लीजिए, ये और भी सुंदर हो जाएगा। तो आपका जो थिंकिंग होराइजन है ना काफी ब्रॉड हो जाएगा। I hope you understood what is expected and this will be Yes. common. ये आप चाहे स्वप्निल सर हो चाहे मैं हूं, ये हम ये कॉमन अप्रोच इंप्लीमेंट करेंगे कि स्टूडेंट विल कम अप विद द टॉपिक, हमको इस पर बात करना, यू विल कम अप विद द टॉपिक, सर हमको वाइवा में इस टॉपिक पे बात करना है, so there is no viva, there is no question asked from our side. In fact, we want you to present the topic in front of the class and people from the, your friends will ask some question, you will answer them. It is fine if you're not able to answer them. We still want you to think more than just rectifying some code. Because I know rectifying the code will not help you in the longer run. Yes, you understood? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है आपके मन में तो पूछो। कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा? No, sir. So here can I call off the session and syllabus is declared to be over. You can ask me to revise the things, any topic at any point of time. Just अपने WhatsApp पे मेरे को share कर दो, मैं session arrange कर दूंगा. Okay? But I will try to arrange that session after your oral. आपका practical, आपके main exam का schedule आ गया है क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। तो अगर शेड्यूल आ जाएगा तो उसके हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे। अगर आपको ओरल के पहले अरेंज करना है बेटा, वी विल अरेंज द सेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी टाइम यू विश। एंड इफ आई एम नॉट हैविंग एनी, अभी क्या हो गया, एफई का लोड हो गया, एफई का सेशन हमारे पास ज्यादा हो गया बिकॉज आई एम टेकिंग 2 डिवीजन फॉर एफई, सो वी वर सपोज्ड टू कंडक्ट लॉट ऑफ एक्स्ट्रा लेक्चर्स because they have their IA and their semester is very short, they have only 2 months semester, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा और मंडे का और ये हो गया था सेशन। तो it was very nice speaking to you guys. You people are wonderful people. Like we were together last 2 semesters. It was very nice experience. I hope you have understood the things, and I know you will do very good in your life. Hopefully, we might meet again for some subject in future. If that is possible, I come primarily for machine learning or NLP, like such subject that actually excites me. So let's see when we can meet in future for teaching learning session. Okay? We will definitely sure, in your practical exam. Thank you very much. Thank you very much. It was very nice, teaching to you. Thank you, sir. Thank you. Even our pleasure, sir. Thank you. Yep. Thank you. सर हाँ बोल बेटा। सर थोड़ा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाउट था सर। बोल बेटा। सर मुझे है ना फंक्शन का एक रिकर्शन करना है, लेकिन हाँ। उस रिकर्शन में ना कैसा है, एक वो फंक्शन खुद को है ना 12 बार कॉल कर रहा है एंड वो 12 बार इसलिए कॉल कर रहा होगा क्योंकि तेरा इनपुट वैसा होगा ना। नहीं सर, मुझे रिक्वायर्ड है कि वो खुद को 12 टाइम्स कॉल करेगा एक बार में, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट कॉल विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। पहले 12 के पहले 12 कॉल होने चाहिए, फिर इसके अंदर का बात होना चाहिए। I agree, but then it is not the machine that will decide. वो तेरे कोड के ऊपर आएगा ना, तू तेरे कोड के स्निपेट्स भेज मेरे को, मैं देखूं जरा क्या कर रहा है तू इसमें। यस सर। You can mail me or you can share me, ठीक है? WhatsApp पे भी शेयर कर सकते हैं। चलेगा सर, WhatsApp पे सेंड कर। ठीक है? ओके, चलो थैंक यू ऑल। मैं नोट शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? मैं और मैं क्या करूंगा, पूरा नोटबुक जो एओए का है ना, वो पूरा नोटबुक का पीडीएफ बना के भी टीम पे डाल दूंगा। ओके सर, चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।